हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गो मैकेनिक। लास्ट वीडियो में हमने आपको इस वोल्क्सवैगन वेंटो की कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर बने आई बटन पे क्लिक कीजिए। As discussed in the last episode, this Vento met with an unfortunate accident, जिसकी वजह से इसके कुछ पैनल्स में डेंटिंग एंड पेंटिंग रिक्वायर्ड। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कंप्लीट डेंटिंग एंड पेंटिंग प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फिक्सिंग द डिफॉर्म्ड पैनल। हम सबसे पहले डेंट को रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद विल बी एडिंग बॉडी फिलर्स टू द पैनल। उसके बाद हम पेंट लेयर ऐड करेंगे एंड फाइनली will end everything with a clear coat। डेंट को फिक्स करने के साथ साथ इसके कुछ पार्ट्स में चिप्स एंड स्क्रैचेस भी हैं, लाइक द फ्रंट बम्पर एंड द पैसेंजर डोर। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फेंडर लाइनर को रिमूव करके डिफॉर्म्ड पैनल को फिक्स कर दिया है। We had made it like original। If I run my hand across this, it's very smooth, body lines match हो रही हैं and it's ready for the process। डिफॉर्म्ड पैनल को फिक्स करने के बाद हमने इसमें बॉडी फिलर ऐड कर दिया है and after it dries up we'll do dry sanding first and after that wet sanding to make the surface smooth for painting। सो गाइज, हमने यहाँ पर बॉडी फिलर को पहले कार पे लगाया था एंड आफ्टर इट ड्राइज अप हमने एक बार ड्राई सैंडिंग की एंड उसके बाद वेट सैंडिंग की। सो गाइज, जैसे हमने आपको बताया था, इसके बम्पर्स, रियर बम्पर एंड फ्रंट बम्पर में कुछ टचअप्स की ज़रूरत है। बम्पर को हमने 20 ग्रिड सैंड पेपर से सैंड कर दिया है एंड आफ्टर दैट वी हैव एडेड बॉडी फिलर्स। नाउ थिंग्स आर डन एंड इट इज टाइम फॉर मास्किंग प्रोसेस टू सेव द कार फ्रॉम ओवर स्प्रे। नाउ गाइज, इट्स टाइम फॉर अस टू मूव टुवर्ड्स द पेंटिंग प्रोसेस। We are finally done with the painting process and look at this, it's looking like brand new। गो मैकेनिक आपको देता है 100% पेंट मैच गारंटी। आप इस पैनल को देख सकते हैं जिस पे ओरिजिनल पेंट है एंड दिस बम्पर इज रीपेंटेड। Nobody in this world can tell the difference। अब समय है गो मैकेनिक की स्टैंडर्ड एसी सर्विस का। इसमें सबसे पहले हम एसी गैस को रीफिल करेंगे। आफ्टर रीफिलिंग द एसी गैस हम कैबिन फिल्टर को चेक करेंगे और अगर वो सैल्वेजेबल कंडीशन में हुआ देन वी कैन रीयूज़ इट। यहाँ पर फिल्टर को देखते हुए लगता है वी कैन जस्ट क्लीन इट एंड देन यूज़ इट अगेन। इसके बाद वी विल वॉश द रेडिएटर थॉरली विद वाटर टू क्लीन ऑल द डस्ट एंड डेब्रीज एंड देन वी विल डू सम फाइनल चेक्स एंड फाइनली वी आर डन।
सो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इस Volkswagen Vento की कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस दिखाई थी एंड सेकेंड पार्ट वॉज ऑल अबाउट गो मैकेनिक्स डेंटिंग एंड पेंटिंग सर्विस अलॉन्ग विद द रेगुलर AC सर्विस। अब हम बात करते हैं अबाउट कंप्लीट कॉस्ट ऑफ द सर्विस फॉर दिस Vento। Go Mechanic की signature comprehensive service on this Volkswagen Vento costed just ₹6,999. The comprehensive service includes air filter replacement, oil filter replacement, fuel filter replacement, coolant top-up, brake fluid top-up, car scanning, exterior cleaning and other necessary checks. The vehicle also required a regular AC service जिसकी total cost हुई ₹2,200. Denting and painting the driver side fender costed ₹2,200, जबकि bumper को required थे कुछ touch-ups which costed ₹1,500. The total cost for denting and painting on this Volkswagen Vento was around ₹3,700. Finally, the comprehensive service plus the regular AC service and denting and painting costed ₹14,000 for this VW Vento. The price also includes GST. भूलिए मत, आपको मिलती है 1 month या 1000 किलोमीटर की Go Mechanic वारंटी। That's a promise. Go Mechanic uses 100% genuine OEM and OES part and we never compromise with quality. So this was all for this video. आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। Subscribe to the Go Mechanic channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. This is your buddy Karan signing off. See you on next Saturday. Goodbye and happy motoring.